Yeah, all yours, Kamal. Okay, sir. Thank you very much. So, good evening to each one of you. And today's our topic is common mistakes in the financial statements vis-a-vis Schedule 3 and accounting standards. So, as usual, we will discuss in a kind of interactive mode, and I will be keeping on asking the questions, and I assume I will be getting no answers again today. तो देखते हैं कितने लोग आंसर आज नहीं करते हैं. Let us have the otherwise competition. कितने लोग आंसर नहीं करेंगे, they will be the greatest personalities today. तो भूपेंद्र जी, आप कोई आंसर देखते हैं आज, करते हैं नहीं करते हैं? And Chandra Mohan ji also, I can see him and many other people. So let us start discussion by the basics. Why we need financial statements to be compliant vis-a-vis accounting standards? There is a reason for it. The reason lies in the law. So if you see section number 129, subsection 1 of Companies Act, what section 129, subsection 1 of Companies Act says? It says that the financial statement shall give you a true and fair view. And to ensure that financial statements are giving true and fair view, you have to comply with the accounting standard. Let me highlight for you. Just see these words. The financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of the company or companies, and they shall comply with the accounting standards. So what you need to understand, section number 129 subsection 1, ये mandate करता है हर कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, कि जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, they must be complying the accounting standards as applicable. Why I am saying as applicable? Because if the company is a listed company, then they have to comply in the AS, converse version of IFRS. तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पर एप्लीकेबल है, आपको कंप्लाई करना मैंडेटरी है. एंड देन सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 1 also says that the financial statement shall be in the form or forms as may be provided for different class of companies in schedule 3. तो दूसरी जिम्मेदारी क्या है? Second responsibility is that not only you have to comply with accounting standards as applicable, you also need to ensure that schedule 3 is also complied with. So what we need to understand first of all, section number 129 की compliance करेगा कौन? Auditor comply करेगा या company comply करेगा? So the answer is company. So section 129 is the domain of the companies. And what is the requirement over here? Number one, companies need to comply with the applicable accounting standards. And number second, companies need to comply with the presentation requirement schedule 3 as well. Now the question arises, if section number 129 is the domain of companies management, then what the auditor will do? For this very purpose, we have section number 143 subsection 3 clause E. अब हमेशा याद रखिएगा कि सेक्शन नंबर 143 इन कंपनीज एक्ट डील्स विद ऑडिट रिपोर्ट्स. तो सिंपल सा आसान तरीका याद करने का क्या है कि सेक्शन नंबर 143 डील्स विद ऑडिट रिपोर्ट्स. अब नाउ इन दैट वेरी सेक्शन वी हैव सबसेक्शन 3 clause E which says that auditors have to report whether in their opinion financial statements are complying with the accounting standards or not. So what you need to understand कि section number 129 कंपनीज ने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, इसकी रिपोर्टिंग ऑडिटर्स को अपनी रिपोर्ट में करनी है. एंड वी मोस्ट ऑफ द पीपल यू मस्ट बी डूइंग दिस रिपोर्टिंग ऑलरेडी. अगर आप अपना ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट याद करें, तो इन द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यू हैव अ कैप्शन आइटम, लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. उस कैप्शन आइटम के नीचे एक लाइन लिखते हैं हम लोग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बट विद ऑल आई मस्ट से माय एक्सपीरियंस, आई मस्ट से ये जो लाइन लिखी जाती है ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं लोग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएस से कंप्लाई करते हैं, मेरा अपना व्यू है कि लोग ये लाइन लिखते तो हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे उनके तो लगेगा पता कि देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन. So now out of that experience I will take many examples today, and all these examples are real world examples. तो जो एनुअल रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, स्टडी की हैं, उसके अंदर जो गलतियां निकली हैं, उन गलतियों को मैंने कंपाइल किया है. एंड आई ऑलवेज डू बिलीव the people can learn from others mistakes. तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लोग क्या गलती करते हैं और उन गलतियों से आज सीखते हैं. ऑल्दो विजय जी ने मुझे कहा था कि कमल आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और शेड्यूल 3 कवर करना है आज, बट मेरा मन हुआ कि व्हाई ओनली शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वी नीड टू कैप्चर वन मोर आइटम. इट इज फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ अस. शेड्यूल सेकंड, यू मस्ट बी अवेयर, शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनीज दैट डील्स विद एप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ. तो उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काफी हद तक मैं कहूंगा कि हिसाब किताब रखता है. तो स्टार्ट विद शेड्यूल सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी क्या करना है, आपके सामने एक स्क्रीन आएगा. उस स्क्रीन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर मैं लिखूंगा कि क्या नॉन कंप्लायंस है, और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए था वो लिखा होगा.
आई विल नॉट डिस्प्ले यू इमीडिएटली दी सॉल्यूशन, आई विल सीक योर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गलती क्या है, आप बताइएगा इसके अंदर गलती क्या हुई है, क्या करना चाहिए था। तो इट कम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, जो भी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स रियल वर्ल्ड से, एनुअल रिपोर्ट से निकाले गए हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर आर्बिट्रेरी नहीं है, इट इज ऑल रियल वर्ल्ड सिनेरियो। So now what happened, one of the annual report I visited and the accounting policy of the company was extracted regarding depreciation. तो उसमें देखिए जो नॉन कंप्लायंस नजर आया, वो नॉन कंप्लायंस क्या था। The accounting policy was stating depreciation on property, plant and equipment is provided on straight line method over their useful lives and in the manner specified in schedule second to the companies act. However, in respect of certain plant and machineries and electrical installations, depreciation is provided as per their useful lives, assessed on the basis of technical evaluation by the external valuer ranging from 20 to 40 years. अभी आप सब है ना बाकी काम छोड़कर एक बार मेरे साथ आ जाइए और आप मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स कि इसके अंदर नॉन कंप्लायंस क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, आई एम नॉट आस्किंग यू वेदर देयर इज नॉन कंप्लायंस और नॉट, आई एम ऑलरेडी सेइंग इट इज अ नॉन कंप्लायंट अकाउंटिंग पॉलिसी। नाउ माय क्वेश्चन टू द हाउस इज यू नीड टू टेल मी इन दिस left hand side box as per your wisdom what kind of non compliance you are able to visualize। आपके हिसाब से इसमें क्या नॉन कंप्लायंस है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। तो कंपनी ने गलती क्या किया हुआ है वो पढ़ता हूँ। कंपनी ने गलती क्या किया है, कंपनी ने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड over their useful lives in the manner specified in schedule second to the companies act. However, in respect of certain plant and machinery and electrical installations, depreciation is provided as per their useful lives, assessed on the basis of technical evaluation by external valuer ranging from 20 to 40 years। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि गलती क्या है इसके अंदर। तो लेट मी स्पिल दी बीन्स, आप ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड क्या कहता है यहाँ पर, as per the requirement of schedule second to the companies act, it was viewed that when different useful lives have been used by the company for the purposes of charging depreciation on property plant and equipment, the useful lives shall be specifically disclosed by the company by way of notes to the accounts। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है ना शेड्यूल सेकंड का एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 का, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास काफी सारी आइटम्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की और सबका यूजफुल लाइफ अलग अलग है, then you have to specifically tell the useful life to the users by disclosing the same in the notes to accounts। Now what is happening in this very scenario, they are simply saying the useful life is ranging from 20 to 40 years। So in a way they have given a blanket kind of a statement। This blanket kind of a statement is not allowed, and what is the requirement, it was just required that proper disclosures regarding the useful lives of plant and machineries and electrical installations should have been made, identifying the items of plant and machineries and electrical installations with their respective is very important useful life as mentioned as estimated by the external valuer। तो गलती क्या है यहाँ पर, उन्होंने लिख दिया कि प्लांट एंड मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं जिनका यूजफुल लाइफ 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में फॉल करता है। हमें ऐसा नहीं लिखना था, हमें बताना था इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का लाइफ कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का लाइफ कितना है, एंड दैट टू आइटम बाय आइटम। तो मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मेरे पास एक है जनरेटर, एक है प्रोडक्शन इक्विपमेंट, तो मुझे जनरेटर का और प्रोडक्शन इक्विपमेंट का यूजफुल लाइफ अलग अलग करके बताना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। आई बिलीव दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो तो पूछ सकते हैं। I presume there is no query on this forefront। Let me move to this second matter। इससे बताइए क्या गलती है, I read it for you। एक अकाउंटिंग पॉलिसी फिर से एक्सट्रैक्ट की गई, तो उसमें लिखा गया था शेड्यूल सेकंड टू द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन रेट्स एज प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 14 टू द ओल्ड कंपनीज एक्ट। आपको ये अच्छे से याद होगा, द ओल्ड कंपनीज एक्ट वाज रिक्वायरिंग टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एज पर द रेट्स बीइंग प्रिस्क्राइब्ड। अभी क्या हो गया, जो शेड्यूल सेकंड आया नए कंपनी लॉ में, उसमें यूजफुल लाइफ को प्रिस्क्राइब किया गया है, और आई शुड नॉट से प्रिस्क्राइब, यूजफुल लाइफ को इंडिकेट किया गया है। नो therefore the company viewed that schedule second to the companies act 2013 provides only straight line method of depreciation and any other method cannot be used। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ रहा है, कंपनी कहता है कि शेड्यूल सेकंड के अंदर केवल और केवल
स्ट्रेट लाइन मेथड को ही प्रिस्क्राइब किया गया है, इसीलिए कंपनी WDV मेथड फॉर डेप्रिसिएशन यूज नहीं कर सकती है। हाउ फार यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ, आई शुड से, नॉन कंप्लायंस? तो आपके हिसाब से इसमें गलती क्या है? अब जैसे मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, WDV कैन बी यूज्ड। सी, आई एग्री WDV कैन बी यूज्ड एंड दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग। बट मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा। इफ यू से WDV कैन बी यूज्ड, आई बिलीव दिस आंसर इज बाय योर हार्ट बट नॉट बाय द लॉ। ये एक लॉजिकल आंसर तो हो सकता है, तो मुझे जो सवाल पूछना है वही पूछना है कि WDV मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसा लिखा है शेड्यूल सेकंड में या नहीं लिखा है? तो आई गोट वन आंसर, रमेश जी, नॉट रिटर्न। अगर आप ये कहते हैं कि इट इज नॉट रिटर्न, देन द क्वेश्चन अराइजेस, फिर हम ये क्यों लिख रहे हैं कि WDV मेथड कैन बी यूज्ड? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल सिनेरियो की रिक्वायरमेंट क्या है। तो शेड्यूल सेकंड डज नॉट स्पेसिफाई एनी मेथड। सबसे पहले तो याद रखना है कि शेड्यूल सेकंड में SLM, WDV या कोई और मेथड प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। So the statement saying that schedule second is prescribing the method of depreciation itself is a wrong statement. And what is the correct scenario? That schedule second does not specify any method of charging depreciation, but only provides the indicative useful life of the assets. The company can use any appropriate method of depreciation, such as SLM, WDV, considering the useful life of assets and other requirements as specified in Schedule Second to the Companies Act. Please focus on the words. I am using the words use any appropriate method. Now, where this appropriate method is being prescribed? This is being given by accounting standard. Accounting standard 10 कहता है कि आप स्ट्रेट लाइन बेसिस या WDV बेसिस या कोई और बेसिस फॉर डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं, बट जो भी मेथड आप यूज करते हैं, the method should be used in such a manner which reflects the consumption pattern of economic benefits of the assets. तो जिस पैटर्न में आप assets को यूज करते हैं, उस पैटर्न के हिसाब से you can choose in between SLM, WDV or maybe another method. तो याद क्या रखना है, दो चीजें याद रखनी है यहाँ तक अभी। एक, कि schedule second is not specifying any method of charging depreciation, number one, and number second, the methods of depreciation are being provided by accounting standard number 10, and if you're complying with, say, Ind AS, then we have Ind AS number 16. So what is the correct position? Therefore, the view of the company that schedule second to the Companies Act 2013 provides only straight line method of depreciation is not correct. So I believe this point is also clear to each one of you. अब ये आगे आते हैं, थर्ड इश्यू को डील करते हैं। इसमें देखिए, बताइए मुझे क्या गलती है। तो आई रीड दिस नॉन कंप्लायंस फॉर यू। तो एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को देखा गया, एंड इन दैट वेरी अकाउंटिंग पॉलिसी व्हाट दे आर राइटिंग, property, plant and equipment are stated at cost, net of recoverable taxes, trade discount and rebates, less accumulated depreciation and impairment losses, if any, as computed in accordance with the method prescribed under Schedule Second to the Companies Act 2013. Intangible assets, दूसरी accounting policy क्या लिखी है? Intangible assets are stated at cost of acquisition, net of recoverable taxes, trade discount and rebates, less accumulated depreciation, or I should say amortization, depletion and impairment losses, if any, as computed as per the method prescribed under Schedule Second of the Companies Act. मुझे एक एक पार्टिसिपेंट, दो पार्टिसिपेंट की स्माइल से ऐसा लग रहा है कम से कम उन्हें एक आंसर तो पता है। एक आंसर तो मुझे लगता है आपको पता होगा, क्योंकि इसमें लिखा है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो तो अभी हमने क्वेश्चन किया ही है। So one thing is sure कि in this very non-compliance agenda, one non-compliance is apparent. What is the non-compliance? What is the non-compliance which is apparent here? The non-compliance apparent here is method of depreciation. ये बताइए क्या इसमें कुछ और गलती भी है? Is there any other mistake here? Ramesh ji, any answer from your side? Surinder sir, any answer? Anil ji, I can see the Chandramohan ji also. अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। जितनी भी क्वेरीज आपके सामने भी आ रही है ना, और अभी आएंगी, इसके अंदर जो पोर्शन येलो है उसी में ही गड़बड़ है।
इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, जस्ट देखिएगा इसमें वर्ड लिखे इम्पेयरमेंट लॉसेस। तो अपने आप से सवाल पूछिए, वेदर शेड्यूल सेकंड डील्स विद इम्पेयरमेंट लॉसेस ऑल्सो। आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो यहाँ गलती क्या है, दो गलतियां नजर आई हमें। पहली गलती क्या नजर आती है कि शेड्यूल सेकंड ने कोई मेथड प्रिस्क्राइब ही नहीं किया हुआ। दिस इज फर्स्ट मिस्टेक विच कंपनी डिड। सेकंड इज सेकंड इज कि ये कहते हैं कंपनी की पॉलिसी में इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इज आल्सो प्रोवाइडेड एज पर शेड्यूल सेकंड, बट शेड्यूल सेकंड इटसेल्फ इज नॉट डीलिंग विद द प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉसेस। तो अब इसके अंदर देखिए क्या सोल्यूशन निकलता है इसका। लेट अस हैव द एनालिसिस। So what you need to understand, Schedule Second does not specify any method of charging depreciation, which we already covered, but only provides the indicative useful life of the assets. The company can use any appropriate method, which we discussed earlier also, as per accounting standards such as SLM, WDV, considering the useful life of the assets and other requirements as specified in Schedule Second. Now, what is important over here? Further, Schedule Second also does not deal with impairment of assets. Para second of schedule third, in fact, states that, sorry, not schedule third, rather schedule second, it is a typing error. Para second of schedule second, in fact, states that for the purpose of this schedule, the term depreciation includes amortization. Therefore, the policy is incorrect, which we already stated. तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आनी चाहिए हमें कि इम्पेयरमेंट लॉस का कोई लेन देन नहीं है शेड्यूल सेकंड से। दूसरा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का कोई लेन देन नहीं है शेड्यूल नंबर सेकंड से। और सी दिस वन, इसमें बताइए क्या गलती है। So another non-compliance which was observed is one of the accounting policy was stating depreciation on property, plant and equipment is provided on straight line method over their maximum useful life as specified in Schedule Second to the Companies Act 2013, except where different useful lives are adopted on the basis of technical advice obtained by the company from independent experts. मैं आपको याद दिला दूं कि जितने भी हम यहाँ पर चीजें बात कर रहे हैं, all these are real world mistakes which we have captured over here. तो इसमें आपको क्या गलती नजर आती है? I got one answer from Bhupender ji. Maximum useful life is not defined. Okay, भूपेंद्र जी थोड़ा सा अपना आंसर अगर आप कोशिश कीजिए और रिफाइन कर पाए तो। I got one answer from चंद्रमोहन जी, two mistakes. एक मिस्टेक तो कॉमन ही है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को लेकर, बट इज अनदर मिस्टेक। See what we need to understand, schedule second is not giving you the maximum or minimum useful life. शेड्यूल सेकंड के अंदर जो लाइफ लिखी हुई है, रमेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने चैट बॉक्स में आपका आंसर देखा है अभी। जो लाइफ दी गई है शेड्यूल सेकंड में वो इंडिकेटिव है, इट इज नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट मैक्सिमम यूजफुल लाइफ इज ग्रॉसली इनकरेक्ट। इट इज नॉट इन टेंडम विद व्हाट शेड्यूल सेकंड एनविसाजेस, एंड दैट्स व्हाई अगर इसका हम एक सॉल्यूशन देखें तो क्या समझ में आती है बात। The useful lives as given under Schedule Second for various types of assets are indicative only and are not minimum or maximum. Where the useful lives of various specific assets are same as those under Schedule Second, the company should use these useful lives. In case the useful life of an asset, as estimated by the company, supported by the technical advice, external or internal, differs, that is higher or lower from the indicated useful life given under Schedule Second, the former should be applied by the company for providing depreciation. यहाँ पर जो लर्निंग आती है वो लर्निंग आती है कि जब आप नोट्स में लिखते हैं कि यूजफुल लाइफ शेड्यूल सेकंड से डिफरेंट है, तो आपको पहला काम क्या करना है कि एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेना है इन रिटर्न, और इस चीज को आप नोट्स में एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल एडवाइस टेकन फ्रॉम द एक्सपर्ट द कंपनी हैज अडॉप्टेड अ डिफरेंट यूजफुल लाइफ। आई बिलीव दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। तो संघवी साहब, मुझे लगता है जो क्वेश्चन आपने रेज किया उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। यस, यू आर राइट, यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन इन द नोट्स टू कम। नाउ सी दिस वन। ये मिस्टेक तो ऐसी है कि मैं आज भी देखता हूँ कि पीपल आर कमिटिंग इन प्लेंटी। So one of the accounting policy was stating depreciation on those assets whose actual cost does not exceed rupees 5,000 has been provided at 100% in accordance with Schedule Second of the Companies Act 2013, very popularly called as low value items. तो लिखा हुआ है पॉलिसी के अंदर कि जो लो वैल्यू आइटम है वो आइटम होगा
जिसका एक्चुअल कॉस्ट 5,000 से ऊपर नहीं है. And what the company is doing, they are writing it off for depreciation by 100%. And they are saying in accordance with Schedule 2 of the Companies Act. Is there any discrepancy over here? This is a very fantastic question by Ramesh ji. Sir, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने. Let me discuss this question first of all before I move forward. बहुत ही बढ़िया सवाल है रमेश जी का. क्वेश्चन है रमेश जी का. Most of the companies take useful lives as given in Schedule 2 without analyzing useful life. Is it correct? It is grossly incorrect. Let me emphasize, it is grossly incorrect. अब वो क्या होता है कि हम जब ऑडिट करने जाते हैं इस पे इतना शायद ध्यान नहीं जाता है या कुछ और होता होगा. बट यस, दिस इज ग्रॉसली इनकरेक्ट. इसका कॉन्ट्रावेंशन आता है. दिस इज द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. और अगर इंडेस है तो इंडेस नंबर 16. सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला. और ये रियल वर्ल्ड में ऐसी चीज है. होता क्या है कि मान लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम योर पीयर रिव्यूअर और मे बी अ क्वालिटी रिव्यूअर, आई विल ऑलवेज से अ क्वेश्चन टू यू. मेरा क्वेश्चन ये होगा रमेश जी कि बीइंग एन ऑडिटर, क्या आपने चेक किया कि मैनेजमेंट ने यूजफुल लाइफ डिटरमाइन कैसे किया? तो ऑडिटर के पास जवाब क्या होता है कि मैनेजमेंट हैज गिवन मी रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट दे हैव टेकन द सेम लाइफ व्हिच इज गिवन बाय शेड्यूल 2. दिस आंसर इटसेल्फ इज रॉन्ग, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि मैनेजमेंट हैज टू एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ. इफ इट कम्स इक्विवेलेंट टू शेड्यूल 2, फेयरली ओके. If it is not coming, then you have to have a technical report. But now when they will estimate the useful life, they must have some basis कि मैंने because of these factors useful life 10 साल या 15 साल निकाला. वो बेसिस नहीं होता है. और अगर वो बेसिस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रेज्यूम करना पड़ेगा कि कंपनी ने शेड्यूल 2 का लाइफ एज इज उठा लिया है. दैट इज नॉट अलाउड. एनीवेज, एंड अदर क्वेश्चन इज बाय, I should say not the question, rather a statement by Anil ji. Low value item is not defined. Anil ji बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. It is a very perfectly drafted statement. Schedule number 2 itself is not dealing with low value items. Schedule 2 में low value items का कोई concept ही नहीं है. There's a statement by Shirishi also. Every year useful life of assets need to be calculated afresh. Yes, or only if there is any change in life of asset. Shirish ji, आप कभी AS10 डाउनलोड करना या Index 16 डाउनलोड करना. Very categorically the standard is writing that at least annually management has to review two things: method of depreciation and useful life. इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल आपको रिव्यू करना है कि क्या असेट की यूजफुल लाइफ कम ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ, क्या बराबर तो नहीं है. लेट अस टेक अ सिचुएशन. एक एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए, दिस इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी. There is a probability that the company may be having a computer or a laptop, and that computer or a laptop must be having a physical existence. But that computer or a laptop may be having zero WDV in the books of accounts. ऐसा हो सकता है. आप कोई लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, उसका WDV जीरो हो चुका होगा तो बुक्स में तो नहीं आएगा, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस आज भी है. अभी होता क्या है कि ऐसा लैपटॉप या कंप्यूटर जिसका WDV जीरो है, विच इज कॉल्ड एज अ फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, आप यूज तो उसको कर रहे हैं ना. अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है इट इज एन इंडिकेशन दैट सम यूजफुल लाइफ सीरीज प्रेजेंट इन दिस लैपटॉप और कंप्यूटर. तो आपको टेक्निकल रिव्यूअर से इसका रिपोर्ट लेना होगा. और इसका यूजफुल लाइफ मान लीजिए आता है और वो बोलता है एक्सपर्ट कि इसका यूजफुल लाइफ 2 साल और है, तो उस केस में यू हैव टू रीवैल्यू द असेट्स. तो दिस विल बी अ केस ऑफ रीवैल्यूएशन. आपको फिर रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा और जो नए ईयर्स बताता है यूजफुल लाइफ, इसमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. चंद्रमोहन जी, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपको? Shirish ji, the statement is that means the rate of depreciation will undergo changes every. I will say the word will is not okay. आपने जो लिखा जैसे this means the rate of depreciation will change every year. I will say rate of depreciation may undergo a change. Why I am saying may undergo a change depending upon the life which is undergoing a change or not. So because आपका क्वेश्चन फंक्शनल है दूसरे फैक्टर पर, तो ये will की बजाय मैं बोलूंगा. But yes, it can happen. And then Ramesh ji का एक statement है, which is a good statement. Schedule 2 does not prescribe 5,000. It is a policy decision. Yes, perfectly all right. Ramesh ji, बिल्कुल सही लिखा है आपने. Schedule 2 is not defining any kind of low value item. It is a policy domain of the management, and this policy domain is permitted by virtue of the guidance note of ICI on Schedule 2. तो बहुत पहले guidance note आया था इंस्टीट्यूट का depreciation को लेकर, उसी में बात लिखी भी गई थी. So let me read this for you. So what is now a statement over here? The statement is
Schedule second does not prescribe any requirement to provide depreciation at 100%. Guidance note, GNB's guidance note on depreciation states that as the life of asset is a matter of estimation, the materiality of impact of such charge should be considered with reference to cost of the asset. The size of the company will also be a factor to be considered for such policy. Accordingly, a company may have a policy to fully depreciate assets up to certain threshold, considering materiality aspect in the year of acquisition. तो बीइंग एन ऑडिटर, अगर आपको कंपनी बोलती है ना कि लो वैल्यू आइटम्स को हमने फुल्ली डेप्रिशिएट कर दिया, तो यू मस्ट हैव द एनालिसिस रिपोर्ट और डायग्नोस्टिक स्टडी कि उनका मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड क्या है लो वैल्यू आइटम को डिफाइन करने का. अब वो लो वैल्यू आइटम 5,000 हो या 5 लाख हो, उसके लिए एज एन ऑडिटर मुझे चेक करना है कि बेसिस क्या है. बेसिस नहीं है तो हमें उनको हेल्प करना पड़ेगा शायद बेसिस के लिए भी, कि बेसिस को आप तैयार करके दिखाइए. इफ यू रिमेंबर लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें वी डिस्कस ना communication of matters to those with governance. So we can always say them ki if there is no basis, I will qualify your report, or the report can be impacted. Ultimate call is, and the understanding is, schedule second is nowhere defining what is low value item, and what is low value item will be defined by the management depending upon the materiality levels determined by the management. Next, schedule 3 पे बात करते हैं अब. शेड्यूल सेकंड के अंदर तो जो मेजर मिस्टेक्स होती रहती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया. अब शेड्यूल 3 पे आते हैं. आपसे पहले सवाल पूछता हूँ बिकॉज ये वाला क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा हूँ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं है, सो इट्स अ काइंड ऑफ ओरल क्वेश्चन. माय ओरल क्वेश्चन टू द लिसनर्स इज, प्लीज इसको गूगल पर सर्च मत कीजिएगा, बिना गूगल पर सर्च करके बताइएगा, वेदर शेड्यूल 3 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस और नो. Whether schedule 3 deals with cash flow statement, yes or no. I got one answer from Anil ji. Answer is no. Okay. Any person who favors yes? Whether schedule 3 deals with cash flow statement or not. So the correct answer is no. आप कहीं पर भी नोट कर लीजिए या आप इसको जहन में रख लीजिए. शेड्यूल 3 is not dealing with cash flow statement. Why this is important? When you see the notes to accounts of the companies, one of the heading is basis for preparation and presentation of financial statements. In most of the companies where I experienced, people are writing the balance sheet, the statement of P&L and cash flow statement have been prepared as per Schedule 3. This statement is wrong because cash flow statement is not prepared as per Schedule 3, rather it's prepared as per AS3. तो ये statement कभी नहीं लिखना हमको कि the balance sheet, the statement of P&L and the cash flow statement has been prepared and presented as per Schedule 3. इस statement के अंदर जो ये वाला part है कि cash flow statement is prepared as per Schedule 3, this is wrong. With these words, let us analyze many items as per Schedule 3. तो एक एक करके चलते हैं. इसको मैं skip कर रहा हूँ. ये format है आपका Schedule 3 का. Schedule 3 format of balance sheet and P&L. So I am skipping this thing. Let us come to the non-compliance straightforward. So the question of non-compliance I need to ask you. The Schedule 3 requires all items in the balance sheet to be classified as either current or non-current. One of the underlying criteria for such classification is operating cycle. No disclosure was made for operating cycle. तो क्वेश्चन उठता है कि हम जब जानते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, शेड्यूल 3 के अंदर कॉन्सेप्ट आया. इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट शेड्यूल 3 में जो आया ऑपरेटिंग साइकिल का, इसमें ये कहा गया कि अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 12 महीने से ऊपर का है तो उस केस में भी आपके कुछ आइटम्स करंट बन सकते हैं. नाउ क्वेश्चन उठता है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा पढ़ के कि the discrepancy is operating cycle is not disclosed and hence you will give me the answer कि operating cycle disclose कर देना चाहिए. But my question to the house is where it is written that operating cycle should be disclosed in the notes to account. There is a question from Chandra Mohanji meanwhile. The question is, and this question is on schedule 2nd, can a company provide for depreciation under different method in the same year? Chandra Mohanji, possibility आ सकता है depending upon the nature of equipment. Let us take the example of nuclear power plant. In case of nuclear power plant, a damage took place and after damage you repaired the nuclear power plant. तो ऐसा हो सकता है कि for the first 6 months you took SLM as basis and for the next 6 months you took WDV as a basis. So depending upon the change in the consumption pattern, जैसे मैंने बताया ना, whatever method of depreciation you are choosing, it should be based upon the consumption of
पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द एसेट्स। तो अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कंज्यूम करने का पैटर्न चेंज हो रहा है और वो चेंज ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, देन वी कैन हैव डिफरेंट मेथड्स इन द सेम ईयर आल्सो। बट जनरली जो सिचुएशन ये वाली है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही आएगी, क्योंकि नेचर ऑफ असेट्स जो होंगे वो बड़े स्पेशल होंगे इस केस के अंदर। एग्जाम्पल जो मैंने एक लिया वो लिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का। एम आई क्लियर चंद्रमोहन जी? ओके, मीनवाइल द अदर क्वेश्चन इज बिफोर यू। तो अब आप ये तो मुझे कह देंगे, बड़ा कहूंगा आराम से कह सकते हैं आप मुझे कि कमल इसमें दिक्कत जो है वो ये है कि ऑपरेटिंग साइकिल डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज कर दीजिए। बट कहाँ लिखा है इस बारे में डिस्क्लोज करने के लिए? जैसे आई गॉट वन स्टेटमेंट फ्रॉम अनिल जी, ऑपरेटिंग साइकिल नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, इनफैक्ट वी हैव टू डिस्क्लोज। तो जरा देखिएगा सोल्यूशन क्या है इसका। सो वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर some of the requirements of guidance note. Guidance note here means guidance note on schedule 3. So guidance note on schedule 3 recommended that the disclosure about company's operating cycle be given as a part of notes to the financial statement. तो वो कहने के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन ये मैंडेटरी है, बिकॉज अब नफरा के केसेस देख लें या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के केसेस देख लें या पीयर रिव्यू बोर्ड की बात कर लें, ऑलवेज दे फॉलो गाइडेंस नोट। तो गाइडेंस नोट on schedule 3 for accounting standards compliant companies states that you have to disclose operating cycle as a part of notes to the financial statements. Now those who are listening me, most of them must be the auditors of small companies also, big companies also. आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंपनी स्मॉल कंपनी है तो क्या वहां पर भी ये एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। ये बट नाउ ये रियल प्रॉब्लम इज हाउ मेनी ऑफ द क्लाइंट्स आर कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग साइकिल। तो यू हैव टू कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल फॉर दैट पर्पस। वो कैसे कंप्यूट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा आप यूट्यूब से हेल्प लीजिएगा या क्लास 12 का अकाउंटेंसी का बुक पढ़िएगा, आपको लग जाएगा पता। इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट नो, व्हेन इन क्लास 12th or maybe in college days we were supposed to calculate the ratios. One of the ratio was debtors turnover ratio, creditors turnover ratio. All these ratios, turnover ratios, primarily are called as operating cycle ratios. तो नंबर ऑफ डेज में आप ऑपरेटिंग साइकिल निकाल सकते हैं उसी तरीके से। बट यहाँ पर फिलहाल आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग साइकिल। आप क्लाइंट को कहेंगे, एडवाइस करेंगे कि वो कंप्यूट करके लाए, उसको आप चेक करेंगे वेदर इज प्रॉपर्ली कंप्यूटेड और नॉट, और फिर ये चेक करेंगे कि क्या ऑपरेटिंग साइकिल को नोट्स में डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है। अगर नोट्स में डिस्क्लोजर नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल का तो कॉन्ट्रावेंशन है, यू हैव टू अकॉर्डिंगली इशू योर ऑडिट रिपोर्ट। या ऐसा भी हो सकता है, कैन ऑल्सो हैपन द ऑपरेटिंग साइकिल एज envisaged by the client is not agreeable to you. Client कहता है कि my operating cycle is 18 months, but you are of the view that operating cycle is of 12 months. In such a case, it will be a case of difference of opinion, and maybe you have to analyze whether I should issue emphasis of matter paragraph or qualified report. So I believe this point is also clear. Krish ji, ये real problem है. Big challenge to calculate operating cycle for service industry. Yes, it is a challenge. बट अगेन द गुड थिंग इज कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर चैलेंज को थोड़ा सा अगर हम ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं ऑन द बेसिस नंबर ऑफ मैन आवर्स। जैसे मान लीजिए सीए फर्म है, अब सीए फर्म के अंदर व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग साइकिल, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ मैन आवर्स एंड सो ऑन। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्यूट कैसे करना है, इसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम यूट्यूब वीडियोस, दे विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। बट यस, आई मस्ट रिटरेट द बॉटम लाइन हियर इज कि आपके क्लाइंट्स की बैलेंस शीट में आपको देख लेना है नोट्स के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है। एक प्रैक्टिस और भी है कंपनीज की। जनरली नोट्स में क्या लिखते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 मंथ्स। प्लीज अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी प्लीज अंडरस्टैंड शेड्यूल 3 कहता है if you are not able to compute operating cycle, then it is deemed as 12 months. तो मान लीजिए कि आपके क्लाइंट ने कहा 12 मंथ्स है, तो मैं एज एन ऑडिटर पूछूंगा कि प्लीज प्रूव दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसको बड़ा सोच समझ के करना है ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, एंड आई बिलीव ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है। शेड्यूल 3 अमेंड हुआ था इफ यू रिकलेक्ट, और शेड्यूल 3 के अंदर वी हैव टू प्रोवाइड रेशियोज आल्सो। दोज रेशियोज कैन बी हेल्पफुल इन अराइविंग एट द ऑपरेटिंग साइकिल बाय द रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर्स ने, मान लीजिए आरओसी है, आरओसी ने ऑपरेटिंग साइकिल कंप्यूट किया और पता चलता है कि कंपनी के नोट्स में ऑपरेटिंग साइकिल डिस्क्लोज ही नहीं है या डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल डिस्क्लोज है। आरओसी कहता है कि माय वी ऑपरेटिंग साइकिल इज 18 months, क्लाइंट सेज इट इज 22 months, so this could be a matter of litigation.
कहने को बड़ा छोटा सा पॉइंट है, बट यस, छोटा पॉइंट परेशानी पैदा कर सकता है. The statement by Ramesh ji, it can be done for goods, but in case of service, where services are different and payment realization is not stable, it may be difficult to calculate operating cycle. I agree, Ramesh ji. इसमें क्या करना है, जो आपने फैक्ट यहाँ पर लिखा है चैट बॉक्स में, इस फैक्ट को आप डॉक्यूमेंट कीजिए, so that you can prove it is difficult to complete operating cycle, and it will not be in the interest of benefit और cost analysis कि मैं इस पे ज्यादा और दिमाग लगाऊं. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो शेड्यूल 3 ने हमें परमिशन दिया है, इफ इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट देन एज्यूम इट इज 12 months. मेरा काम हो जाएगा ना. क्लाइंट इज ऑल्सो हैप्पी, ऑडिटर इज ऑल्सो हैप्पी, रेगुलेटर इज ऑल्सो हैप्पी. So this kind of documentation we must have always. Next. So let us see this non-compliance. So what happened? In one case, notes to accounts stated that company's operating cycle is 6 months. The sale contract provides for normal credit period of 3 months. However, the company does not expect to receive the payment within 12 months from the reporting date due to ongoing litigation with the customer. दोबारा पढ़ता हूं मैं इसको, बड़ा ध्यान से समझिएगा. नोट्स टू अकाउंट्स में कंपनी ने बताया कि ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ्स का है. जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पीरियड ऑफ क्रेडिट दिया गया है वो 3 मंथ्स का दिया गया है. बट व्हाट हैपेंड, some litigation started with the customer and company is not expecting the payment from the customer will be received within 12 months from the reporting date. Now question arises, still the company classify trade receivables for such customer under current asset category. Is it all right? Yes, any answer? तो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का है. ऑपरेटिंग साइकिल से बिलो है आपका रिकवरी पीरियड विच इज 3 मंथ्स. लेकिन कस्टमर से लिटिगेशन हुआ तो आपको ये उम्मीद नहीं है कि बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर ये पैसा आ जाएगा. तो क्या इस केस में ट्रेड रिसीवेबल्स को करंट असेट कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो लेट अस एनालाइज, फिर मैं बताऊंगा इसकी रियल वर्ल्ड में हो क्या रहा है. काफी सारे सेमिनार्स के अंदर जब फेस टू फेस होता है तो इस पर बहुत डिबेट भी होती है, और वो डिबेट क्या होती है वो आपको वो भी बताता हूँ. लेट मी सी सम आंसर्स. सबके आंसर नो ही आ रहे हैं. ओके ग्रेट. तो जस्ट सी व्हाट दिस सिचुएशन इज. Guidance note here means guidance note schedule 3 requires that, what it requires that since the company does not expect to receive the payment within 12 months from the reporting date, the same should be classified as non-current in the balance sheet. तो आंसर तो सबका ठीक है, आपका सबने नॉन करंट ही कहा. बट यू नो व्हाट हैपेंड इन माय एक्सपीरियंस, स्पेशली इन सेमिनार्स में जब इसको डिस्कस किया था मैंने किसी फिजिकल सेमिनार में, आई वाज सरप्राइज्ड एंड डिसअपॉइंटेड आल्सो. Most of the chartered accountants, they were saying that trade receivable always is current. This is one of the very invalid statement it was being made. ट्रेड रिसीवेबल को लोग बोलते हैं, समझते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल हमेशा करंट ही होता है. ऐसा नहीं है. ट्रेड रिसीवेबल हमेशा करंट होता, लेकिन कब होता? जब हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ना होता या कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल 3 ना होता. इफ यू, those who are seniors listening me, if you try to recollect, earlier days we were having schedule 6. Schedule 6 was also revised. If my memory serves me right, maybe in 2011 it was revised. Prior to 2011, schedule 6 was having no distinction of current and non-current assets as far as trade receivables are concerned. This distinction came by revised schedule 6 because of operating cycle, and the same thing is kept and retained in schedule 3 also. तो याद क्या रखना है हमें कि क्योंकि शेड्यूल 3 ने ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट ला कर दिया और शेड्यूल 3 ने ट्रेड रिसीवेबल्स को, ट्रेड पेबल्स को करंट और नॉन करंट कैटेगरी में बंटवारा किया, तो जो पुरानी कस्टमरी प्रैक्टिस रहती थी कि ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स हमेशा करंट ही माने जाएंगे, वो प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है. आपको हर बैलेंस शीट डेट पर बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अब ट्रेड रिसीवेबल्स को, ट्रेड पेबल्स को भी करंट और नॉन करंट के अंदर बंटवारा करना है. अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, which I believe you must be also experiencing, most of the auditors also and most of the companies also that do not have any analysis
whether a particular trade receivable will fall into current or non current category or not, सभी को हम करंट में डाल देते हैं। ये तो एग्जाम्पल लिटिगेशन का था, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ गया लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रियल वर्ल्ड के अंदर देयर कैन बी सेवरल ट्रेड रिसीवेबल्स which are not under litigation but still they are falling beyond the window of operating cycle, then what to do? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट में भी गलती जा रही है, बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि all trade receivables are current. So I would suggest for this year 2324, please make a proper analysis, ask the client to have a proper analysis. Next. चंद्रमोहन जी ने लिखा है, इफ ट्रेड रिसीवेबल कम्स अंडर नॉन करंट असेट्स देन अंडर व्हिच हेड इट इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट। वेरी गुड क्वेश्चन। इसको समझने के लिए कोई बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे ना नॉन करंट, तो नॉन करंट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल कैटेगरी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक मेरे पास फॉर्मेट है इसका। जस्ट सी, अगर आप नॉन करंट कैटेगरी देखते हैं तो नॉन करंट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, अदर नॉन करंट असेट्स है। अब जरा सो कंपेयर कीजिए करंट असेट से। करंट असेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल है। तो डिबेट जो शुरू हुआ था ना फिजिकल सेमिनार में, शुरू भी यहीं से हुआ था। लोगों ने कहा कि करंट असेट के नीचे ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है, नॉन करंट के नीचे ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर सेज कि ट्रेड रिसीवेबल्स ऑलवेज इज करंट, ऐसा नहीं है। अगर ट्रेड रिसीवेबल नॉन करंट कैटेगरी में जाता है तो वो जाएगा यहाँ पर अदर नॉन करंट असेट्स। गाइडेंस नोट ऑन शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली सेज, guidance note on schedule 3 specifically states if trade receivable is becoming non-current, it will be reflected below the caption other non-current assets. तो ये खास ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है चंद्रमोहन जी का भी, कि अगर ट्रेड रिसीवेबल नॉन करंट हो जाएगा तो कहाँ रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि सेपरेट आइटम नहीं है इसका। तो क्या करेंगे, वी विल टेक अप द लाइन आइटम अदर नॉन करंट असेट्स एंड बिलो अदर नॉन करंट असेट्स वी विल शो ट्रेड रिसीवेबल्स। इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, even in the amended schedule 3 we have a format of aging analysis. In the aging analysis also we have non current trade receivables, one of the line item. So this means the possibility of trade receivables getting non current is there. Is a statement by Bhupender ji, as we signed the report by August, so we should be easily able to identify. अब भूपेंद्र जी कर तो सकते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लोग करते नहीं है। तो वो करना है कि नहीं करना है, वो एक हमारा खुद का प्रेरोगेटिव रहेगा या प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन रहेगा। दैट इज द चॉइस वी हैव टू मेक। नाउ यस, अनिल जी ने शायद गाइडेंस नोट कॉपी करके भेज दिए यहाँ पर, तो आप चैट बॉक्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट, द सीरियस वन, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। In one case, investments were classified into current and non-current category under Schedule 3. Whereas accounting standard 13 requires to classify investments as current and long term. बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। शेड्यूल 3 के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो शेड्यूल 3 कहता है कि आप असेट को और लायबिलिटी को आइटम बाय आइटम करंट या नॉन करंट में क्लासिफाई करेंगे। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट इज शेड्यूल 3 के बाहर चलें तो वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अबाउट इन्वेस्टमेंट में क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स को यू विल क्लासिफाई इनटू करंट एंड लॉन्ग टर्म। नाउ द प्रॉब्लम इज still the company did not make appropriate disclosures about investment under schedule 3 as to classification in tandem with AS 13। मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पर, समझने की बात क्या है। शेड्यूल 3 में लिखा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 कहता है क्लासिफाई इनटू करंट एंड नॉन करंट, AS 13 कहता है classify into current and long term. First question to the house is, and this question will be helpful to solve this query, is there a distinction between long term investments and non current investments? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में और करंट इन्वेस्टमेंट्स में कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? जैसे ये डिफरेंस की बात समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। So I got one answer from a person, but I don't know the name because the name of the phone is coming. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max.
तो विजय जी, आपका आपके यहाँ पर प्रमोशन भी हो गया Xiaomi Redmi Note का. You can charge royalty from them. तो प्लीज अंडरस्टैंड, शेड्यूल 3 में जो करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन होता है, इट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्टिंग डेट. So what schedule 3 says, an asset will be classified as non-current if its settlement is expected beyond 12 months from the reporting date. Now let us come to AS 13. What AS 13 says, investment will be classified as long term. Investment will be classified as long term if its settlement is expected beyond 12 months from the acquisition date. तो दोनों में डिफरेंस हो गया. लॉन्ग टर्म को मैं कैप्चर कर रहा हूं, ट्रिगर कर रहा हूं नथिंग बट एक्विजिशन डेट से. नॉन करंट को मैं ट्रिगर कर रहा हूं फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट से. तो देयर कुड बी अ सिनेरियो, देयर कुड बी ऑन बैलेंस शीट डेट, ऑन बैलेंस शीट डेट there may be a scenario whereby we can have some of the portion of long term investments as current investments. तो 31 मार्च 2024 पर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो एज पर एस 13, उसमें से कुछ पोर्शन जो मेरा होगा वो करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है. एंड फॉर दिस पर्पस the guidance note in schedule 3 stated like this. Guidance note states that though the schedule 3 classifies, sorry, schedule 3 clarifies that accounting standards would prevail over itself in case of any inconsistency between two, but AS 13 does not lay down presentation norms, though it requires disclosures to be made for current and long-term investments. Hence, the portion of long-term investment as per AS 13, which is expected to be realized within 12 months from the balance sheet date, needs to be shown as current investment under schedule 3. तो क्या करना है आपको, जो नोट्स अकाउंट्स बनेंगे ना, उसके अंदर आएगा आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के जस्ट नीचे विद इन ब्रैकेट्स आप लिख दीजिएगा आउट ऑफ विच करंट पोर्शन अमाउंट्स टू दिस मच अमाउंट. So this kind of disclosure will suffice the purpose. अब डिस्क्लोजर आपको कहाँ देना है आपकी चॉइस है. नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि लोग लिखते हैं हेडिंग में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. लॉन्ग टर्म के नीचे लिख देते हैं करंट पोर्शन अमाउंट्स टू दिस मच अमाउंट. तो वो जैसे मर्जी कर लीजिए. अल्टीमेट है कि आपको AS 13 और शेड्यूल 3 दोनों को कोलैबोरेट करना है. नेक्स्ट. So in one of the case, what we found, deferred tax liability was classified into current and non-current category. And similarly, in one of the case, we also found deferred tax asset was classified into current and non-current category. We know very well, Schedule 3 says classify each item into current and non-current. ये तो हम सब जानते हैं. अभी क्या हुआ, कंपनी ने deferred tax asset को करंट में और नॉन करंट में क्लासिफाई कर दिया. कंपनी ने deferred tax liability को करंट एंड नॉन करंट में क्लासिफाई कर दिया. So basic question is, can we classify deferred tax into current and non-current, or should we classify deferred tax into current and non-current? Any answer? भाई इंडेस में अगर आप जाते हैं, इंडेस में तो इंडेस 1 में साफ साफ लिखा है. इंडेस 1 स्पेसिफिकली स्टेट्स कि deferred tax को आप हमेशा नॉन करंट मानेंगे. बट इफ यू गो टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट रिटर्न. तो देन क्वेश्चन उठता है कि क्या एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स माय चॉइस टू क्लासिफाई इनटू करंट एंड नॉन करंट? आंसर इज नो. Guidance note on schedule 3 very specifically and categorically states that deferred tax asset हो या liability हो, so whenever there will be deferred tax, they will always be classified as non current, and that we need to capture. तो ये आप खास बात ध्यान रखिएगा. Accounting standards are silent about the classification into current or non current of deferred tax, and for that very reason we have schedule 3, and schedule 3 guidance note says that deferred tax asset or liability as the case may be should always be classified as non current. तो एक खास ध्यान रखना है आपको कि deferred tax को आप बंटवारा नहीं करोगे करंट में या नॉन करंट में. नेक्स्ट. See this one. In one case, a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period was given. तो वो हम देते हैं ना शेयर नंबर ऑफ शेयर्स का मूवमेंट शेड्यूल, opening number of shares, additions, deletions, closing number of shares. So that reconciliation was given. But again, with that reconciliation, what happened? The company, however, gave such reconciliation for total number of shares in aggregate, whereas the notes also stated that company had issued equity shares as well as preference shares. So any answer for this thing? मुझे लगता है ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है.
तो मान लीजिए कंपनी के पास 100 इक्विटी शेयर थे और 50 प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो कंपनी ने क्या किया, 150 शेयर्स लिख दिया। करना क्या चाहिए था, क्लास ऑफ शेयर्स के हिसाब से रिपोर्टिंग करना था। तो यस रमेश जी, वेरी वेरी मच परफेक्ट। RICO is required, reconciliation is required for each class of share, preference separately and equity separately. So guidance note and schedule 3 also says this thing. Guidance note requires that to make the disclosure relevant for understanding the company's share capital, the reconciliation is to be given even for the amount of share capital, and that should be disclosed separately for both equity shares and preference shares. And more importantly, this is something which is required. Reconciliation for the comparative previous period is also to be given. Normally देखा गया है कि हम करंट ईयर का रिकंसिलेशन दे देते हैं, पिछले साल का रिकंसिलेशन नहीं देते हैं. So you have to give the reconciliation even for the preceding period as a comparative period. Next, in one case, shares in the company held by each shareholder holding more than 5% shares was given by specifying the number of shares held. You know very well कि 5% से ऊपर जो शेयर होल्डर्स हैं उनका नाम जाता है. अभी हुआ क्या, company however gave such shareholding for total number of shares in aggregate, whereas the notes also stated that company has issued equity shares as well as preference. Same answer कि आपको जो 5% का शेयर होल्डिंग बताना है ना, वो क्लास बाय क्लास बताना है. And that's the same scenario over here. Guidance note says company should disclose the shareholding for each class of shares, both within equity and preference shares, and this information should also be given for comparative previous period also. अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर. Let me place this question before the house and then I will seek your answers. Just एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए. Say the company is RST Limited and it has equity shares in ABC Limited. या थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं इसे. So the company is RST Limited. Equity shares held by Mr. R, director, say 3%. Preference shares held by Mr. R, director, say, let us say it is 5%. So total is 8%. Now my question to the people is, शेड्यूल 3 कहता है कि आप उन लोगों के नाम बताइए जो कंपनी के अंदर 5% से ज्यादा शेयर्स रखते हैं. तो जब मुझे 5% से ज्यादा वाला परसेंटेज कंप्यूट करना है, तो मैं इक्विटी प्लस प्रेफरेंस करूं या ना करूं. जैसे मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कर दिया तो 8% आ गया. बट जब हम 5% शेयर्स की बात करते हैं, तो क्या मुझे इसको एग्रीगेट करना है कि नहीं करना है? कैसे नो, क्या मैं ये कहूं कि इंडिविजुअली इक्विटी और प्रेफरेंस 5% से नीचे है या बराबर है? इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं. ऑलरेडी इट्स ओके. तो क्या मैं ये कहूं कि इंडिविजुअली दीज आर नॉट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ 5% एंड हेंस देयर इज नो नीड फॉर डिस्क्लोजर, और शैल आई एग्रीगेट देम अप? तो हमें क्या याद रखना है रमेश जी? पहला आंसर गलत हुआ है आपका अभी, बाकी सब आंसर ठीक आए थे आपके. तो हमें क्या करना है, हमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को एग्रीगेट करना है, और अगर वो 5% से ऊपर जाता है तो हमें क्लास बाय क्लास अलग करके दिखाना है. तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा वो टेबल बनेगा उसमें लिखूंगा शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5%. उसमें नाम आ जाएगा मिस्टर आर. मिस्टर आर के जस्ट बिलो इक्विटी एंड प्रेफरेंस. इक्विटी 3%, प्रेफरेंस 5%, टोटल विल बी 8%. दिस विल बी द डिस्क्लोजर. तो ये हमें खास ध्यान रखना. रियल वर्ल्ड में भी ना रमेश जी प्रॉब्लम है ये वाली. रियल पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स बड़ा बहुत कम कंपनीज इशू करती है नॉर्मली, तो बट जहां पर इशू होते हैं तो पीपल हैव अ परसेप्शन कि इक्विटी नीड्स टू बी काउंटेड अलोन, बट द फैक्ट इज द वर्ड्स यूज्ड आर शेयर होल्डिंग. तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएंगे. नेक्स्ट. So what was observed in one case, the loan payable by the company, just a moment, loan payable by the company, इस पे ध्यान दीजिएगा, loan payable लिखा है यहाँ पे.
Loan payable by the company was converted into equity under an arrangement between the company and the lender. The company disclosed the same as shares allotted as fully paid up pursuant to the contracts without payment being received in cash. So what Schedule 3 says, Schedule 3 in Note 6A Part 1 Clause 1 says that you have to make a separate disclosures for non-cash allotment. तो अभी क्या हुआ, कंपनी का लोन पेबल था, वो लोन पेबल को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो जो इक्विटी कन्वर्शन हुआ तो कंपनी कहता है कि दिस इज अ नॉन कैश अलॉटमेंट. हाउ फार यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ virtue taken by the company? So loan payable being converted into equity, is it a non-cash allotment? तो जनरल एंट्री क्या हुआ होगा, जनरल एंट्री हुआ होगा लोन पेबल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो लोन पेबल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इज इट अ नॉन कैश अलॉटमेंट? ये तो 12वीं कक्षा का सवाल है वैसे, जब उन्होंने पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ी थी. अनिल जी का आंसर आता है कैश. ओके अनिल जी. सी लेट अस स्टार्ट द स्कीम ऑफ एंट्रीज. When the company must have received loan, जब कंपनी को लोन मिला था तो क्या हुआ था? The journal entry was बैंक डेबिट और कैश डेबिट टू लोन पेबल अकाउंट. अभी हमें इनकम टैक्स में नहीं जाना कि कैश कैसे आ सकता है, ओनली फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग आई एम सेइंग. तो बैंक और कैश डेबिट टू लोन पेबल अकाउंट एंट्री हुआ होगा. जब इक्विटी में कन्वर्ट हुआ तो एंट्री हुआ लोन पेबल टू इक्विटी कैपिटल. So in a way, what is happening? The cash you have received already. So when you have received cash already, it is nothing but a kind of a cash allotment only. Non-cash allotment कहना गलत है इसको. And this is the kind of scenario where people were committing mistake. तो eventually तो क्या हो रहा है ना कि entry cash से ही settle हो रही है आपकी. So it is a non-cash allotment? No, it is a cash allotment only. देखिए इसका आंसर ही वही है. तो गाइडेंस नोट में भी ये बात लिखी है. कई बार गाइडेंस नोट में कुछ बातें लिखी होती है तो मुझे लगता है कि क्या आईसीआई सोच के बैठा है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लास 12th का शायद अकाउंटेंसी भूल गए होंगे. मे बी यस. एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दैट वर्च्यू. The guidance note requires that such an allotment is considered as shares allotted for payment being received in cash and not as without payment being received in cash, and accordingly the same is not required to be disclosed in pursuance of this clause. यानी कि आपको ये नॉन कैश अलॉटमेंट के ब्लॉक में नहीं दिखाना है. इट इज अ कैश अलॉटमेंट ओनली. आगे देखते हैं इसमें, देखिए क्या गलती है. The other observation is, in one case, the company made a separate disclosure of shareholding of its promoters, including the percentage change during the year. The company disclosed the same in the format prescribed under Schedule 3, which requires disclosure only in respect of shares held at the end of year. Schedule 3 में amendment आया था ना, उसमें लिखा था कि promoter की shareholding आपको बतानी है, including the percentage change during the year. तो इसमें क्या discrepancy है? Just have a look out what guidance note says. Guidance note requires that the company should also disclose number and percentage of shares at the beginning of the year as additional columns in order to facilitate an understanding of percentage change during the year. तो शेड्यूल 3 में कहा कि आप एंड का ही बताया केवल, but to facilitate comparison and analysis and a fair understanding by the users, guidance note ने क्या कहा that you have to give the number and percentage of shares at the beginning of the year also. And for this purpose, you have to have the additional columns to that very disclosure. तो आपको 31 मार्च 24 का देना ही है, आपको बिगिनिंग 1 अप्रैल 23 का भी देना है. तो बिगिनिंग मींस 1 अप्रैल 23 का कॉलम आप ऐड करोगे, देन फर्दर इश्यूज और बायबैक्स फॉर एग्जांपल आप उसके कॉलम्स ऐड करोगे, देन क्लोजिंग बैलेंस. इस तरह का टेबल आपका बनेगा. अनिल जी, इज इट क्लियर? Because you wrote a statement end of year question mark. Okay. Next. इसके लिए गूगल का हेल्प मत लीजिएगा प्लीज. देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर. In one case, the company received calls in advance from the shareholders. The company disclosed the same as a part of paid up capital. Now we have to go to section 50 also ताकि आपको हेल्प मिले इसको आंसर करने में. Section 50 of the company that says that a company, if so authorized by its articles, may accept from any member the whole or a part of the amount remaining unpaid on any shares held by him, although no part of that amount has been called up. So section 50 जो है, it permits the companies to accept calls in advance. Now what the company did,
कंपनी रिफ्लेक्टेड दिस कॉल्स इन एडवांस एज अ पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। तो वो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट बनाया, उसमें हेडिंग आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे लिखते हैं पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल के अंदर उन्होंने एक आइटम और बना दिया, कॉल्स इन एडवांस। तो क्वेश्चन इज वेदर द कंपनी डिड राइट थिंग और द बैड थिंग। मैं फिर से बताऊं, जितने भी डिस्कशन हम कर रहे हैं आज, जो येलो लेबलिंग है, इट इज द मिस्टेक। और ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, इट इज नथिंग न्यू, द सेम थिंग वाज देयर इन शेड्यूल 6 आल्सो इन द ओल्डर डेज। So let us analyze this, and for this purpose, let me tell you that even ministry has stated something in its press release. So earlier days, it was Department of Company Affairs, which is now MCA. So those days, क्या हुआ था? DCA ने क्लैरिफिकेशन किया था, आपके सामने रेफरेंस भी है। Now, what DCA stated, which is endorsed by guidance note also, calls paid in advance are to be reflected under other current liabilities. And the similar view which I stated is also given by DCA in 1961, जब पुराना कंपनी लॉ होता था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वर्चुअल लर्निंग क्या है? लर्निंग यहाँ पर ये है कि कॉल्स पेड इन एडवांस को आप पेड अप कैपिटल का हिस्सा नहीं बताएंगे, इसको आप अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। और जब कॉल्स पेड इन एडवांस के लिए शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली पेड अप कैपिटल में आ जाएगा। तो सिंपल लर्निंग इज कॉल्स पेड इन एडवांस आर नॉट द पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, दे विल बी रिफ्लेक्टेड इन अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, in one case the company was having long term borrowings. The company nowhere separately disclosed the current maturities of such long term borrowing. Any idea what is current maturity long term borrowings? Yes, Samirji, you're right, because it is not due, so park it in the liabilities. बिल्कुल ठीक बात है आपकी। Yes, any idea what is this current maturity of such long term borrowing? क्या शेड्यूल 3 में कुछ चेंज आया था इसके लिए? So what we need to understand, there had been a change. So there's a cutoff date. Cutoff date is 31st March 2021. Just see very carefully. ये गलती काफी हो रही है आजकल। So what is the scenario over here? Till 31st March 2021, current maturities of all long-term borrowings were required to be disclosed under other current liabilities. Schedule 3 जब पुराने वाला था, अमेंडमेंट से पहले का, which was effective till 31st March 2021, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि current maturities of long-term borrowings they were reflected below other current liabilities. But अभी क्या हुआ है? 1st April 21 onwards, the current maturities of all long-term borrowings will be disclosed under short-term borrowings and not under other current liabilities. तो ये गलती है ना, काफी लोगों से हो रही है अभी भी। अभी अपन को ठीक कर लेना है इसको। ठीक क्या कर लेना है? क्योंकि 1/4/21 से तो हम आगे आ चुके हैं काफी। 23-24 में अगर आज हम बात करें, तो मान लीजिए 23-24 में 2024 के अंदर आपका कंपनी क्लाइंट है, उस कंपनी क्लाइंट के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो करंट मैच्योरिटी है, करंट मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगले 12 महीने में जो पेमेंट ड्यू होने वाला है, तो दैट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग will no longer be reflected under current liabilities but under short term borrowing. ये हमें खास बात ध्यान रखना है। तो चैट बॉक्स के अंदर आप सबने डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक दिया करंट मैच्योरिटी का, बट डिस्क्लोजर प्रैक्टिस के ऊपर हमें याद रखना है कि डिस्क्लोजर प्रैक्टिस चेंज हो चुकी है। What is the change in disclosure practice is before you, and in simple words, the disclosure of current maturities of long-term borrowings will no longer be reflected below other current liabilities, rather they will be reflected under short-term borrowings. ये हमें खास बात ध्यान रखनी है। There is a question, let me read. When a part of long-term liability is due within 12 months, then we classify the same as short-term borrowings. Yes, HG सर जो भी है बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। बस पहले क्या होता था, ये था तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लेकिन इसको हम लिखते थे अदर करंट लायबिलिटीज में। और अब ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ये देखिएगा, in one case the company was having secured long term borrowings. The company disclosed that all long term borrowings are secured against tangible assets owned by the company and personal security of promoters, shareholders and third parties. बड़ा सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें क्या गलती लगती है आपको?
There is a question by Manilal Shahji. Is it compulsory to show as short-term liability? Manilal Shahji, answer is yes. लॉन्ग टर्म बोरिंग का जो पोर्शन करंट मैच्योरिटी में जा चुका है उसको आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आई शुड से रादर शॉर्ट टर्म बोरिंग में ही दिखाएंगे, ये कंपल्सरी है। इस क्वेश्चन में बताइए क्या गलती है। कंपनी ने क्या किया कि सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया हुआ था, बट उन्होंने डिस्क्लोजर में क्या लिखा, ऑल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट टेंजिबल एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी एंड पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स एंड थर्ड पार्टी। इसमें दो गलतियां हैं, आप सोचिए इसमें वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं। लेट मी चेक आउट। शिरीष जी बिल्कुल सही जवाब है। एक तो टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ने लिखा हुआ, ओके गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस सिक्योरिटी पोर्शन? मणिलाल शाह जी बता रहे हैं दो कंपनी में डिफॉल्ट इन ईएमआई पास्ट। तो इन दैट वेरी केस द कॉन्ट्रैक्ट, मणिलाल शाह जी का क्वेश्चन जो है पिछले क्लिप से रिलेटेड है, तो लेट मी आंसर दिस फर्स्ट। इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन ईएमआई पेमेंट इन पास्ट, so that default will not change the nature of current maturity ना। so what we have to see whether contractually, default तो बात की बात है, whether contractually the nature of long term borrowing is traveling into current maturity or not. If the answer is yes, then it will travel to short term borrowing। और शॉर्ट टर्म बोरिंग के नीचे भी जो लाइन आइटम आएगा वो लिखना क्या है हमें, बड़ा आइटम हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, उसके नीचे लाइन आइटम आएगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इटसेल्फ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आइटम। तो देखिए इस वाले जो अभी क्लिप आपके स्क्रीन पे है इसमें दो गलतियां हैं। आई विल स्टार्ट विद द सेकंड मिस्टेक फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट मी आस्क यू द सेकंड मिस्टेक। इफ द प्रमोटर हैज given personal security that if the company will default then promoter will be making this default as rectified one, can it be said कि अगर प्रमोटर ने लोन को चुकाने का पर्सनल कोलेटरल दिया है तो ये सिक्योर्ड लोन है? So the promoter is providing the personal security. Can it be said that the loan taken by the company is a secured loan? बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। I got one answer as no. I got other answer as no. So what we need to understand, ये गलती काफी लोगों से होती है। आई एम ग्लैड कि मेरे पास अभी आंसर नो आ रहे हैं। जो सिक्योर्ड लोन की बात शेड्यूल 3 करता है, this secured loan concept and the requirement of schedule 3 means secured on company's assets. So if third party or promoter has given the collateral for securing the loan, it is not called a secured loan. Let us be very clear about it. Secured loan means the loan which is secured by virtue of the company's own assets, not by third parties or promoters' assets. And दूसरी गलती क्या है इसके अंदर? They are saying all long-term borrowings are secured against tangible asset. ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो असेट्स आपने कोलेट्रल दिए हैं आइटम बाय आइटम बताना पड़ेगा। तो लेट अस से द लॉन्ग टर्म लोन इज ₹100 and for ₹100 you have given the collateral of, let us say, furniture, let us say property, land, building. So you have to give the description of all these items. You cannot say secured against tangible assets. You have to give a description कि कौन कौन से tangible assets को secure रखा गया है, and it must match also with the charge being created with ROC. Let us have the solution. So in terms of the guidance for schedule 3, a blanket disclosure will not suffice, and hence the nature of security shall also be specified separately in each case. Further, the nature of security should also cover the type of asset given as security. For example, inventories, property, plant and equipment, intangible, etc. There is something important to understand, that is clause number C. When promoter, shareholders or third party gives any personal security for any borrowing, such as shares or other assets held by them, disclosure should be made thereof, though such security does not result in classifying such borrowing as secured. तो आप उसको secured borrowing नहीं बोलेंगे, आप उसको secured borrowing नहीं बोलेंगे, आप उसको disclose जरूर कर देंगे कि this borrowing is collateralized by third parties. It will be in the category of unsecured borrowing. ये borrowing unsecured रहेगा, बट अनसिक्योर्ड बोरिंग के नीचे या नोट्स में जहां भी सही लगे आपको वहां पर आप एक्सप्लेनेटरी रिमार्क डाल देंगे कि दिस इज बीइंग कोलेटरलाइज्ड बाय थर्ड पार्टी एसेट्स और थर्ड पार्टी अफेयर्स। दिस विल बी सफिशिएंट कंप्लायंस। अच्छा बात बताइएगा,
एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाता है, लेट मी कम बैक टू दिस। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना, करंट मैच्योरिटी ऑफ सच लॉन्ग टर्म बोरिंग को, इस पर एक क्वेश्चन है, मेरा सवाल है आपसे। तो वी हैव करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। यू आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट you need to make working capital changes, adjustments to arrive at cash from operations, or I should say operating activities. What happens here? Equation क्या बनता है हमारा? Net profit plus, just a moment, net profit plus non-cash items plus decrease in current assets plus increase in current liabilities minus decrease in current liabilities minus increase in current assets. अभी मैं कुछ यहाँ पर येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ. So you have this current liability here and you again have current liability here. अभी what we learned that current maturities of long-term borrowings, shall be reflected as short-term borrowings. तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इस शॉर्ट टर्म बोरिंग को, जिसको हमने अभी लिखा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्या इस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त हम करंट लायबिलिटी का हिस्सा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वेदर वी विल कंसीडर current maturities of long term borrowings as a part of current liabilities or not, while preparing and presenting cash flow statement and computing cash from operating activities. I got one answer as no. Shirishi, I am not asking question of schedule 3. So, but yes, your answer is right. We learned CFS is not a part of schedule 3, so we'll not consider as answer. ठीक है आपका. So what do we need to understand? Even if we are saying current maturity of long-term borrowings below short-term borrowings, it will not change the nature of the loan. It will still remain long-term loan. So because of the way things are reflected, they will not change the true character of the loan, and that's the reason the FRRB, Financial Reporting Review Board, also clarified that you will not consider this as a part of working capital adjustments while calculating operating activities cash flow. I believe this point is clear to each one of you. Now, ये भी हम कर चुके हैं. Let us discuss next issue. इसका बताइएगा. So what happened in one case? The company was having some leasehold improvements. The company disclosed leasehold improvements by clubbing the same under assets held under lease. One of the, I should say, very big mistake people are making. तो क्या हुआ? कंपनी के पास लीजहोल्ड असेट्स जो थे उस पर कुछ इंप्रूवमेंट किया, जिसको कहा हमने लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट, उसको क्लब कर दिया असेट अंडर लीज में. इज इट करेक्ट? By the way, can any one of you please tell me, let us first understand, can any one of you please tell me what is leasehold improvement? Leasehold improvement क्या होता है? Let us first clarify and understand कि ये leasehold improvement होता क्या है.
व्हाट इज द मीनिंग और डेफिनेशन, समथिंग लाइक दैट। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट होता क्या है, तो शायद क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा उसके बाद। व्हाट इज लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट? एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। लेट अस अज्यूम कि आपने एक बिल्डिंग लीज पर लिया। जब बिल्डिंग लीज पर लिया आपने, तो बिल्डिंग के अंदर बहुत इंटीरियर्स वगैरह खराब था, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नहीं था। तो आपने अपने लैंडलॉर्ड को कहा कि बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं है, फर्नीचर वगैरह ठीक नहीं है, इंटीरियर ठीक नहीं है, आप इसको ठीक करा के दो। तो व्हाट हैपेंड, द लैंडलॉर्ड स्टेटेड कि मैंने आपको बिल्डिंग दे दिया है, अब आगे जो करना है आपको करना है। आपने कहा ठीक है। आपने बिल्डिंग को लीज पर लिया और अपनी बिल्डिंग के अंदर आपने इंप्रूवमेंट्स कराए, सुधार कराया। क्या किया आपने? नए ट्यूबलाइट्स लगवाए, नए पंखे लगवाए, व्हाइट वॉश कराया, इंटीरियर कराया। तो जो आपने ये खर्चा किया है, इसको हम बोलते हैं लीज होल्ड इंप्रूवमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, whatever expenditure is being made by the lessee, for example interior work, electrical installations, तो क्या ये जो लीज होल्ड इंप्रूवमेंट है, इसको मैं ये कहूं assets held under lease? अरे आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। सोल की क्वेश्चन के अंदर पूछना क्या चाह रहा हूं मैं। तो आपने व्हाइट वॉश करवाया, आपने इंटीरियर करवाया, आपने कुछ प्लांट्स वगैरह रखवा दिए, डेकोरेशन पीस रखवा दिए, तो ये तो आपने खर्चा किया है। क्या ये लीज होल्ड इंप्रूवमेंट जो आपने किया, ये आपका असेट हेल्ड अंडर लीज आएगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। या तो ये P&L में राइट ऑफ होगा, अगर ये खर्चा जो है ये 12 महीने से ज्यादा का ऊपर का बेनिफिट नहीं दे रहा है, या इट विल बी असेट। जैसे मान लीजिए आपने व्हाइट वॉश कराया, तो व्हाइट वॉश कराने के बाद आप इसको सोच सकते हो कि इसको मैं रिपेयर मेंटेनेंस में खत्म कर दूं। बट आपने मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करवाया, तो इसका जो लाइफ है 12 महीने से ऊपर का है, इट कुड बी लीज होल्ड इंप्रूवमेंट एसेट आल्सो। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेंस, यू हैव टू either capitalize or write it off. But yes, one thing is surely certain, it will never be classified under lease. तो जरा देखते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। Guidance note states that the leasehold improvements should be shown as separate asset class. So this is a part answer. It could be expensed off also. तो देखने वाली बात होगी जो leasehold improvement है, इसका नेचर क्या है। And depending upon that, one thing is certain that leasehold improvements in most of the cases will be capitalized as separate asset. इसका separate asset बनाएंगे आप, इसको separate depreciate भी करेंगे। और depreciate करने के लिए schedule second, जैसे हमने बात पहले की, वो follow भी करना पड़ेगा। This one. In one case, the company was having some investments in LLPs. The company ने LLP में कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था। You must be aware that even a company can become partner in LLP. एक कंपनी LLP में पार्टनर बन सकती है। What happened? The company disclosed the same under the subheading investments in partnership firm. तो आप शेड्यूल 3 देखेंगे ना, शेड्यूल 3 के अंदर लिखा होता है इन्वेस्टमेंट्स, उसका ब्रेकअप देना पड़ता है। उस ब्रेकअप के अंदर अगर आप देखोगे, तो ब्रेकअप के अंदर यू विल फाइंड आइटम इज इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, बट देयर इज नो आइटम called as investment in LLP. इन्वेस्टमेंट इन LLP के नाम से कोई सेपरेट आइटम लिखा ही नहीं है शेड्यूल 3 के अंदर। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो नोट भी डाल दिया मैंने याद करने के लिए। Schedule 3 requires disclosure in regard to investments in the capital of partnership firms, the names of the firms with the names of all their partners, total capital and shares of each partner. तो LLP के बारे में तो स्पेसिफिकली लिखा ही नहीं है, तो कुछ इसमें गलती है। ये कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो LLP में इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसको भी दिखा दिया बिलो दी हेडिंग इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। तो गलती तो है, बट इसका आप समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? लेट अस अंडरस्टैंड। The guidance note states that LLP is a body corporate. If you refer section 3 subsection 1 of LLP Act, LLP is a body corporate, and hence we can always say LLP being a body corporate cannot be considered as a partnership, unlike partnership act we are discussing already. So hence disclosures pertaining to investments in partnership firms will not include investments in LLPs. You cannot compare apple with oranges ना। तो LLP तो बॉडी कॉर्पोरेट है और पार्टनरशिप जो है वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी है। तो आप क्लब नहीं कर सकते LLP को विद पार्टनरशिप फर्म्स। और इसीलिए गाइडेंस नोट ने कहा द इन्वेस्टमेंट्स इन LLPs विल बी डिस्क्लोज सेपरेटली अंडर अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो अदर इन्वेस्टमेंट्स का कैटेगरी आपको मिल जाएगा शेड्यूल 3 में, उसके नीचे आप लिख सकते हो अदर इन्वेस्टमेंट्स के नीचे इन्वेस्टमेंट्स इन LLP। दैट विल बी द कंप्लायंस। सो लर्निंग हियर इज investments made in partnership firm cannot be clubbed with the investments made in LLPs. That is the learning over here. Next, इसमें बताइएगा
In some cases, the company has given capital advances for procurement of property, plant and equipment. तो property, plant equipment खरीदना था कंपनी को, इसके लिए आपने capital advance दे दिया. Now, one company disclosed the same. Same is the capital advance. One company disclosed the capital advance under the subheading capital work in progress. Another company disclosed the same as short-term advance, as property, plant and equipment is expected to be received in next months from the next, let us say 3 months from the reporting date. इसको 3 months कर देते हैं. तो क्वेश्चन आपके लिए सामने है कि आपने जो कैपिटल एडवांस दिया हुआ है, कंपनी ने क्या किया, उस कैपिटल एडवांस को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा दिया. एक कोई और कंपनी थी, उसने क्या किया, कैपिटल एडवांस है उसको शॉर्ट टर्म एडवांस दिखाया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट था वो आपको रिपोर्टिंग डेट के 3 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा. तो एज पर योर विजडम, व्हाट यू बिलीव इज अ डिस्क्रिपेंसी इन दिस होल इश्यू? यस, एनी आंसर? भूपेंद्र जी का क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू द प्रीवियस क्लिप. Regarding previous example, where will be the investment in partnership firm be? भूपेंद्र जी, पार्टनरशिप फर्म के लिए तो सेपरेट आइटम है हमारे पास. अगर आप शेड्यूल 3 देखेंगे ना, शेड्यूल 3 के अंदर आप हेडिंग देखना इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के जस्ट नीचे आपके पास 5 या 6 आइटम्स मिलेंगे, उसमें से एक आइटम है इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, बट देयर इज नो आइटम एज इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी. तो उसको क्या करें? उसके लिए आप देखोगे ना, जो वो 5 या 6 आइटम है उसके आखिर में लिखा हुआ है अदर इन्वेस्टमेंट. तो अदर इन्वेस्टमेंट में हम एलएलपी को डिस्क्लोज कर देंगे. आई बिलीव द पॉइंट इज क्लियर भूपेंद्र जी. नाउ if I come back to this question which is visible on screen, there are primarily two questions. Question number one is, if I say this question in a very simple way, the question is whether capital advance being given be reflected as capital work in progress, is question number one. And question number second is whether capital advance being given for property, plant and equipment, it is going to be received within 3 months from the reporting date, whether such capital advance can be reflected as short-term advance. Any answer? So let us resolve. पहले तो अभी याद रखिएगा कि कैपिटल एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. हमारे पास कैपिटल एडवांस के लिए सेपरेट आइटम है बैलेंस शीट के अंदर. तो लेट अस एनालाइज वन. मेरे पास 2 आंसर्स आए, दोनों ठीक आंसर्स हैं. लेट अस एनालाइज हियर ऑन द स्क्रीन. So what the guidance note says, capital advances are shown separately under the heading long-term loans and advances and are not classified as capital work in progress. Guidance note states that typically companies do not expect to realize capital advances in cash. Rather, over the period, these get converted into PPE and intangible assets, which by nature are non-current assets. Hence, capital advances should be treated as non-current assets irrespective of when such assets are expected to be received and should not be classified as short-term or current. तो सिंपल सी बात क्या आ जाती है, अगर कैपिटल असेट्स के लिए आपने कैपिटल एडवांस दिया है तो आप इसको कभी भी शॉर्ट टर्म में करंट नहीं बनाएंगे, इसको हमेशा लॉन्ग टर्म रखेंगे. दूसरी बात क्या आ जाती है कि कैपिटल एडवांस को कभी भी आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रिफ्लेक्ट नहीं करें. There is a question by Chandramohan ji. Asset in possession of a company but not in the name of company. For example, second hand JCB purchase but pending due to pendency of loan transfer. So see Chandramohan ji, accounting moves on substance over form. I repeat, accounting moves on substance over form. तो इसको ऐसे समझिएगा, जेसीबी आपके नाम में अभी रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन जेसीबी आपकी पोजेशन में है. So if I presume when JCB came to your possession, you are having the control over JCB. That means you can direct how and when JCB can be used. In such a scenario, JCB is under control, and because JCB is under the control, irrespective of whether it is being transferred in your name or not, it will be still considered as your property, plant and equipment. And if you refer Accounting Standard 10 or India 16, they have also used the words property, plant and equipment are those tangible items which are in possession of the entity. And then they have defined what is the meaning of possession. Possession means in my control.
तो आपके क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है, अगर जेसीबी आपकी पोजीशन में है और आपके कंट्रोल में है, चाहे इसके पेपर्स आपके नाम में रजिस्टर हुए हो या ना हुए हो, जेसीबी को आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाएंगे। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नोट्स टू अकाउंट्स में इसका सफिशिएंट डिस्क्लोजर आएगा कि जेसीबी इज येट टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। एम आई क्लियर चंद्रमोहन जी? ओके, तो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट इशू। ये जरा समझिएगा ध्यान से। अब गलतियों वाले जो क्वेश्चंस हैं थोड़े अलग तरीके से आपके सामने आएंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू। इशू इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शेड्यूल 3 एंड एएस 3। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या समझिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है, जस्ट अ सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या इंड एस 7 की हम बात करें, क्या लिखा गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एएस 3 and Ind AS 7 says that deposits with original maturity of 3 months or less only should be classified as cash equivalent. तो अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या आती है। Thus, bank balances held as margin money or security against borrowings are neither in the nature of demand deposits nor readily available for use by the company and accordingly do not meet the aforesaid definition of cash equivalents. तो अगर हम AS3 की डेफिनेशन देखें कैश इक्विवेलेंट की, उसके अकॉर्डिंगली जो बैंक बैलेंसेस मार्जिन मनी के रूप में रखे हैं या एफडी सिक्योर्ड अपने करवा रखी, एफडी की कोलेटरल दे रखी है आपने, तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं माने जाएंगे। बट if you travel to schedule 3 says cash and cash equivalent comprise of balances with banks held as margin money or security against borrowings, guarantees, etc., and bank deposits with more than 12 months maturity. अब क्वेश्चन क्या आता है कि AS3 बैंक बैलेंसेस हेल्ड एज मार्जिन मनी को कैश इक्विवेलेंट नहीं मानता, शेड्यूल 3 बैलेंसेस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी को कैश इक्विवेलेंट मानता है। इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजोल्व कैसे करें। there is a statement in the chat box, law will prevail over AS. In fact, this is otherwise. Schedule 3 says accounting standards will prevail schedule 3. शेड्यूल 3 के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि एएस जो है वो प्रिवेल करेंगे शेड्यूल 3 को। बट द थिंग इज एएस विल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3, प्लीज समझिएगा। एएस विल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3 only with respect to presentation requirements. बट डेफिनेशन तो प्रिवेल नहीं कर सकता ना, तो क्या किया जाए। वी हैव टू गो what guidance note says. We have to go the way with the guidance note. Guidance note ने इसका समाधान दिया। What the guidance note says. तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बनता है how to deal with a situation when there is an apparent conflict between the requirement of schedule 3 and AS with respect to items which should form part of cash and cash equivalents. So we know very well AS would prevail over schedule 3. So accordingly, company need to make necessary modifications in the financial statements. Accordingly, the conflict should be resolved by changing the caption cash and cash equivalent. So schedule 3 का जो line item heading है वो cash and cash equivalent है। अब गाइडेंस नोट कहता है कि आप इस हेडिंग को चेंज कर दो और हेडिंग को बना दो कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और कैश एंड बैंक बैलेंस को आप बाइफरकेट कर दो दो सब हेडिंग्स में। पहला सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और दूसरा सब हेडिंग अदर बैंक बैलेंसेस। अब क्या करना है इसके बाद, द फॉर्मर should include only the items that constitute cash and cash equivalents defined in accordance with AS3 and note the schedule 3, while the remaining line items may be included under letter heading. तो यहाँ पर जो ये हेडिंग है अदर बैंक बैलेंसेस, इसमें आ जाएगा आपका बैलेंसेस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट द गाइडेंस नोट हैज स्टेटेड। अगर आप किसी पीएसयू को ऑडिट करते हैं ना, तो पीएसयू के ऑडिट में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये वाला डेफिशिएंसी काफी जगह निकाला है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं किया कंपनीज। ये क्वेश्चन देखिएगा। इन वन केस the company was engaged in manufacturing of cars and has made sale of scrap which was generated during the manufacturing process. The company disclosed the sale of scrap as other non-operating income. इसमें क्या गलती है? क्या हम स्क्रैप सेल को रेवेन्यू दिखाएं या अदर ऑपरेटिंग इनकम दिखाएं?
एटलीस्ट वन थिंग इज सर्टेन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्या मैं सेल ऑफ स्क्रैप को नॉर्मल रेवेन्यू दिखाऊं या अदर ऑपरेटिंग इनकम दिखाऊं। आई गॉट वन आंसर रमेश जी कहते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ओके, लेट अस एनालाइज। गाइडेंस नोट सेज दैट sale of manufacturing scrap arising from operations for a manufacturing company should be treated as other operating revenue since the same arises on account of company's main operating activity। तो मेन रेवेन्यू तो नहीं बन सकता, ये क्या बन जाएगा आपका अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो रमेश जी बस थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको अपने आंसर में, ये अदर ऑपरेटिंग इनकम की बजाय अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू बन जाएगा। हाँ अगर ये इंडेस होता तो इंडेस में ये बन जाता आपका अदर ऑपरेटिंग इनकम, बिकॉज वहां पर इनकम वर्ड को यूज किया गया रेवेन्यू के लिए। नेक्स्ट, in one case the company was having interest from customers on amounts overdue, the company has disclosed the same as other operating revenue। तो आपने माल बेचा उधार पर और कंपनी के लोगों ने, आई मीन कंपनी के कस्टमर्स ने टाइम पर पैसा नहीं दिया, तो जो एग्रीमेंट था कस्टमर से वो कहता था कि अगर आप डिले पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट साथ में देना पड़ेगा, which is called as interest on amounts overdue from customers। Now what the company did, company reflected this interest from customers on amounts overdue as a part of other operating revenue। तो इसमें गलती तो आपके सामने है, बट करना क्या चाहिए था, what was the requirement? So just see, simple requirement only, guidance note states that these kind of interest income other than a finance company should be disclosed under heading other income। तो ये other income में जाएगा, other operating revenue में नहीं जाएगा। हाँ अगर ये एनबीएफसी होता या बैंक होता तो वहां पर अगर लेट अस अज्यूम शेड्यूल 3 नहीं फॉलो करते हैं लोग, एनबीएफसी तो फॉलो करता ही है, तो ये क्या बन जाता आपका, ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू बन जाता। तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर अदर इनकम। इसमें देखिएगा, in one case certain penalties were levied upon the company under PF law, the company has disclosed the same under employee benefit expense as contribution to provident fund। तो हमने पीएफ की लेट पेमेंट की, तो कुछ फाइन लगा, पेनल्टी लगी, तो कंपनी ने क्या किया, इसको दिखा दिया below the heading employee benefit expense as a part of contribution to PF। so what is the mistake over here, you know very well, but करना क्या चाहिए था, तो ये पेनल्टी लगाया गया, क्या करना चाहिए था, कहाँ दिखाना चाहिए था ऐसे। तो just see the analysis, the guidance note says, let us see the answer also, other expenses। okay, guidance note says that the penalties and other similar amounts paid to the statutory authorities are not strictly in the nature of contribution and should not disclose here, rather what they where they will go into other expenses। तो मैंने पीपीटी में लिखा नहीं है, बट आप नोट कर लीजिए कि ऐसा कुछ अगर हुआ होगा तो ये जाएगा आपका अदर एक्सपेंसेस में। तो रमेश जी का आंसर बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट, in one case the company has taken certain assets on finance lease and was paying lease rent for the same, the company has disclosed the finance charges on finance leases under the heading miscellaneous expense। तो गलती तो आपके सामने है, बट करना क्या चाहिए था। जैसे अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपने एक कार खरीदी और कार खरीदने के लिए आपने 3 साल का लोन लिया, तो 3 साल का लोन लिया तो आप उसका ईएमआई दे रहे हैं, तो जो ईएमआई दे रहे हैं उसके अंदर आपका जो अमाउंट है, एक तो जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, एक जा रहा है इंटरेस्ट अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है वो तो हो गया लीज रेंट इन अ वे, जो इंटरेस्ट जा रहा है क्या उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंस में दिखा सकते हैं, आंसर इज नो। एंड फॉर दिस वेरी पर्पस व्हाट guidance note says, and even AS19 also says, guidance note states that the finance charges on finance leases are in the nature of interest expenses and hence should also be classified as interest expense under the heading finance cost। तो शेड्यूल 3 में आप देखेंगे ना, फाइनेंस कॉस्ट का सेपरेट हेड है, तो फाइनेंस कॉस्ट का सेपरेट हेड है, उसके अंदर दिखाना पड़ेगा इसको। आप इसको वी कैन नॉट से इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो भूपेंद्र जी आपका आंसर तो है, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, अंडर फाइनेंशियल चार्ज। बट जो इसके लीगल वर्ड्स है ना भूपेंद्र जी, वो फाइनेंशियल चार्ज नहीं है, वो फाइनेंस कॉस्ट होगा। ये देखिएगा, इन वन केस द कंपनी हैज पेड सम इंटरेस्ट ऑन शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। तो एडवांस इनकम टैक्स के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं ना, 234BC का। नाउ व्हाट कंपनी डिड, कंपनी हैज क्लब्ड सच इंटरेस्ट विद करंट टैक्स अंडर द हेडिंग टैक्स एक्सपेंस। तो जो 234BC ये जो इंटरेस्ट जाता है एडवांस टैक्स वाला, क्या इस एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट को जो पे करते हैं उसको हम करंट टैक्स में दिखाएंगे, आंसर इज नो। गलती तो पता चल गई मुझे, बट दिखाएंगे कहाँ, तो वेयर वी विल रिफ्लेक्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स इफ वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द सेम इन करंट टैक्स, तो कहाँ दिखाया जाएगा इसे।
Any answer? Let us see. There is a question for the preceding discussion. On new car purchases, processing loan charges required to be capitalized. Answer is yes. So whatever the charges you have incurred for loan processing, that will be capitalized. Answer is yes. For this current case study, I got answer from Anil ji. Other expense oblique interest. No Anil ji, answer गलत है वाला. भूपेंद्र जी का आंसर है रिजर्व सरप्लस. नहीं भूपेंद्र जी, रिजर्व सरप्लस में तो नहीं जाएगा. So just understand. Guidance note states that the interest on shortfall in payment of advance income tax is in the nature of finance cost. I emphasize the words finance cost and hence should not be clubbed with the current tax. The same should be classified as interest expense under the finance cost. However, such amount should be separately disclosed. तो आपका ना शेड्यूल 3 में सेपरेट हेडिंग है फाइनेंस कॉस्ट. उसके नीचे आप दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड देन दिस थिंग्स विल बी कंप्लायंट. तो हमें क्या याद रखना है, ये ना तो जाएगा अदर एक्सपेंस में, ना जाएगा करंट टैक्स में. इसका सेपरेट हेडिंग आएगा फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट में सब आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड दिस विल बी सफिशिएंट कंप्लायंस. नेक्स्ट ये देखिएगा. इन वन केस द कंपनी हैज इंकर्ड सीएसआर एक्सपेंडिचर. द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड द सीएसआर एक्सपेंडिचर अंडर द हेडिंग अदर एक्सपेंसेस विद द सब हेडिंग सीएसआर एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर. तो जिसके क्लाइंट के कंपनी पर सीएसआर एप्लीकेबल है उनके लिए क्वेश्चन रिलेवेंट है वाला. तो कंपनी ने क्या किया, जो सीएसआर एक्सपेंडिचर है उसको दिखाया बिलो द हेडिंग अदर एक्सपेंसेस और उसका नाम रखा सीएसआर एक्सपेंडिचर. तो व्हाट इज द मिस्टेक हियर? गलती क्या है इसमें, क्या करना चाहिए था? तो जस्ट सी व्हाट गाइडेंस नोट हैज स्टेटेड, और ये मैंडेटरी है. गाइडेंस नोट इन शेड्यूल 3 ने कहा expenditure on CSR activities that qualify to be recognized as expense should be recognized as a separate line item. अब ध्यान देना क्या बोलने वाला हूँ, as CSR expenditure in this statement of P&L. यानी क्या करना है आपको, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है ना, P&L अकाउंट बनता है ना, P&L अकाउंट के अंदर आपको एक सेपरेट लाइन आइटम डालनी है. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जस्ट ऊपर आपको एक लाइन आइटम डालना होगा CSR एक्सपेंडिचर, और उसका सेपरेट नोट बनाना है. उस नोट में यू हैव टू गिव द ब्रेकअप ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन लाइन आइटम सीएसआर एक्सपेंडिचर. तो काफी लोग गलती क्या करते हैं, कंपनी का जो सीएसआर एक्सपेंडिचर का लाइन आइटम है वो डालते नहीं है पीएनएल के अंदर. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सीएसआर एक्सपेंडिचर एक ऐसा आइटम है जिसका लाइन आइटम, आई रिपीट, जिसका लाइन आइटम पीएनएल में हो. ये शेड्यूल 3 ने नहीं बोला, ये गाइडेंस नोट ने बोला है. तो गाइडेंस नोट इन शेड्यूल 3 हैज मैंडेटेड दिस थिंग that CSR expenditure must be reflected in the statement of P&L as a separate line item, and then you must prepare a separate note for the same also to provide the breakup of various heads of expense. ये आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, क्योंकि काफी कंपनीज आज भी इसको गलत कर रही हैं. P&L के अंदर सेपरेट लाइन आइटम सीएसआर एक्सपेंडिचर का डालते ही नहीं है. नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल क्लोज फ्रॉम माय साइड. अर्निंग पर शेयर कंप्यूटेशन. तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, इसको एक न्यूमेरिकल का शक्ल देते हैं. न्यूमेरिकल से अच्छा समझ में आएगा. जैसे सीधे न्यूमेरिकल, आपको मैं 30 सेकंड्स दूंगा, आप बताइएगा ये ठीक है आंसर या गलत है. तो मान लेते हैं कंपनी है आरएसटी लिमिटेड. ऑन 1 अप्रैल 23 इसके पास 10,000 इक्विटी शेयर था. ऑन 1 अक्टूबर 2023 1,000 शेयर्स वर एडिशनल इशूड एज फ्रेश इशू. As a consequence of which, as on 31st March 24, the number of outstanding equity shares are 11,000 shares. Let us assume the profit after tax is 1,10,000. Then the company computed basic earning per share as per AS20. और अगर आप इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स 33. तो basic earning per share was computed by this virtue 1,10,000 PAT, profit after tax, divided by 11,000 total number of outstanding shares. And this BPS, that is basic earning per share, is computed as ₹10. तो आप मुझे बताइए जो ₹10 की जो कंप्यूटेशन है वाला बीपीएस का, ये ठीक है? और अगर ठीक नहीं है, जो कि नहीं है इनफैक्ट, तो उसमें गलती क्या है? व्हाट शुड बी द करेक्ट बीपीएस? इज एनी आंसर? शिरीष जी डाइल्यूटेड भी निकाल लीजिए. चलिए मैं डाइल्यूटेड जानबूझ के नहीं लिखा मैंने, लेटेस्ट, क्योंकि डाइल्यूटेड भी लिखोगे तो सेम ही आएगा ना. मैं कन्वीनियंस के लिए काम करता हूँ यहाँ पर, एक चीज और कर देता हूँ.
अभी बताइए मुझे, कुछ गलती है इसमें तो क्या है? करेक्ट अमाउंट क्या होगा? आई गो टू एन आंसर फ्रॉम चंद्रमोहन जी, 10.48। ओके, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जो ईपीएस होगा, चाहे बेसिक हो चाहे डायल्यूटेड हो, वो 10.48 होगा। एनी अदर पर्सन हु एग्रीज विद दिस आंसर, और इज माई आंसर करेक्ट? ₹10। प्लीज अंडरस्टैंड, हम ₹10 नहीं ले सकते। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते हैं या डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होगा ना, दैट डिनोमिनेटर इज नॉट एक्चुअल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। दैट डिनोमिनेटर इज नॉट actual outstanding equity shares, rather the denominator is actual outstanding weighted equity shares। तो मुझे वेट वाइज इक्विटी शेयर्स कंप्यूट करने हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आइएगा इस वाले स्क्रीन पर, और ये वर्किंग देखिएगा आप। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां पर हमने बीपीएस निकाला ₹10। इट इज करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ हाउ टू कंप्यूट द वेट? 10,000 opening shares, they remain outstanding for entire 12 months. That's why I multiplied 12 by 12. Plus 1,000 shares were additionally issued, but these shares remain outstanding only for 6 months, and that's why the weight is 6 divided by 12. So I will be having total number of shares as weighted average number of shares equal to 10,500, and correspondingly the basic earning per share as well as diluted earning per share in my example will be 10.48 rupees. तो हमें एक खास बात ध्यान रखना है कि टाइम फैक्टर कैप्चर करना है। I got one answer from HG. Some HG sir is there. Yes, your answer is also correct. 10.48 is the computation. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एक्सेल पर बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, और फॉर्मूला का लगाते हैं इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। बस यहीं पर गलती हो जाती है। तो एक्सेल के अंदर आपको अगर कुछ ऐसा हुआ होगा ना, शेयर में चेंज आता है, तो टाइम फैक्टर भी इंक्लूड करना होगा। So this is the whole discussion which I planned for the today's session. If you have any queries, I would be happy to answer. मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया है। पीपीटी मैंने विजय जी को भेज दी है। विजय जी अकॉर्डिंगली आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ चंद्रमोहन जी, प्लीज राइट। विजय जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम। हाँ, चंद्रमोहन जी को एक टेक्निकल क्वेरी है टैक्स ऑडिट पे, तो ही कैन आस्क द क्वेश्चन। चंद्रमोहन जी वैसे आप पूछ लो, लेकिन मैं यू गाइस कैन अनम्यूट एंड आस्क नाउ, आई हैव ओपनड इट। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी अनिल शेट्टी का प्लीज। क्वेश्चन, इफ टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल कैन वी डू? चंद्रमोहन जी मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका कि क्या पूछना चाह उनका रहे हैं। मतलब है कि अगर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं हो तो क्या हम टैक्स ऑडिट कर सकते हैं क्या, अगर क्लाइंट इंसिस्ट करे? अच्छा अच्छा, वो बैंक से लोन लेने के लिए जो लोग जनरली कराते हैं, आंसर इज नो। अगर टैक्स ऑडिट क्लाइंट पर एप्लीकेबल नहीं है और आप बीइंग अ सीए टैक्स ऑडिट कर देते हैं, इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सर एक मेरे को पूछने का था, प्राइवेट लिमिटेड आजकल डिविडेंड डिक्लेरेशन का सोच रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन में हमने जो यूजफुल लाइफ्स है तो थोड़ा एडजस्ट किया है, 7 years 5 years। तो वेदर दैट डेप्रिसिएशन विल बी एज पर लॉ, क्या हमको पूरा चेंज करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप एडजस्ट करते हो डेप्रिसिएशन तो चलेगा, बट आपको उसके लिए टेक्निकल रिपोर्ट लेना पड़ेगा। अच्छा। तो टेक्निकल रिपोर्ट अगर वो बताता है यूजफुल लाइफ, तो वो चल जाएगा, बिकॉज शेड्यूल सेकंड आल्सो परमिट्स द सेम। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? There is a question by Chandramohan ji. Company paid to site in charges and site in charge in turn paid in cash to laborers.
Can it be said as cash expenses? Answer is yes. These are cash expenses. अभी अब इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लिखा है शुरू में कंपनी पेड टू साइड इन चार्जेस, तो कंपनी ने पेमेंट भी कैश में किया होगा। सर मिस्टर अनिल शेट्टी जी की जो क्वेरी का जो आपने रिप्लाई दिया था, सर वो फिर से एक बार दोहरा देंगे। अनिल शेट्टी जी का ये था कि डिविडेंड के लिए उन्होंने कुछ डिप्रिसिएशन का कुछ चेंजेस किया है। सर वो मुझे कंसेप्ट नहीं समझा, सर मुझे हेल्प करेंगे क्या प्लीज? सर क्या होता है जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना, तो मोर द प्रॉफिट मोर द डिविडेंड, दिस इज बरोबर, द बेसिक रूल, करेक्ट and the profit will be eaten away if the amount of depreciation is high, करेक्ट। and depreciation amount can be reduced if the useful life is enlarged. ओके 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 ओके, गॉट इट सर। Okay sir. थैंक यू सर। Pleasure sir. अभी एक क्वेश्चन है शिरीष जी का, सर देर आर टू डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डेप्रिसिएशन शेड्यूल, विच वन टू फॉलो? शिरीष जी पहली चीज तो यह है कि कोई फॉर्मेट है ही नहीं, देयर इज नो फॉर्मेट ऑफ डेप शेड्यूल। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट इज बट शेड्यूल थर्ड से शेड्यूल थ्री कहता है कि आप जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर करेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस देना है, एडिशंस देना है, डिलीशंस देना है, डेप्रिसिएशन देना है, इम्पेयरमेंट लॉस देना है, रिवैल्यूएशन देना है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाना है। एंड द सेम थिंग यू नीड टू डू फॉर द पास्ट ईयर ऑल्सो। तो कोई शेड्यूल का कोई फॉर्मेट नहीं है, इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन योर ओन कंपनीज रिक्वायरमेंट। मान लीजिए अभी कंपनी के अंदर कोई रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू ऐड अ कॉलम ऑफ रिवैल्यूएशन। So format is not prescribed, it is purely your own devised and designed format. चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कंपनी पेड थ्रू एनईएफटी। तो अगर कंपनी ने एनईएफटी के जरिए साइट इंचार्ज को पे किया है और साइट इंचार्ज ने आगे जो खर्चा किया वो कैश को किया है, तो उसमें अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये होगा कि वट एवर कैश एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंकर्ड, इज इट विद अ मैलिफाइड वे और अ बोनाफाइड वे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल जो लेबर को पे करना है वो अमाउंट कैश में ही पे हो सकता है, तो उस केस के अंदर बोनाफाइड इंटेंशन है, देन यू कैन नॉट से इट इज अ कैश इंकरेंस। तो वो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द कंट्रोल फैक्टर। ये कंपनी अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, कंपनी ने साइड इंचार्ज को पे कर दिया एंड वट एवर अमाउंट इज बीइंग पेड is under the control of site in charge, company has no locus standi now, so we can always say it is made in non cash way. हाँ, इसमें एक डिफरेंस आ सकता है, जो ये साइट इंचार्ज है अगर ये कंपनी का एम्प्लॉय हुआ तो उस केस में आप इसको फिर कैश ही मानेंगे। तो फॉर एग्जांपल कंपनी आर एस टी लिमिटेड का एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स को आपने एनईएफटी किया ताकि मिस्टर एक्स आगे लेबर को पे कर सके इन कैश, तो ये कैश में ही खर्चा माना जाएगा। अब बदलता हूँ थोड़ा सा, आरएसटी लिमिटेड ने मैन पावर सप्लाई एजेंट को एनईएफटी किया और मैन पावर सप्लाई एजेंट ने या लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया और लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने आगे कैश में पेमेंट किया, तो ये कैश में खर्चा नहीं माना जाएगा। तो जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट है वो ये रहेगा कि जिसको आप साइड इंचार्ज बोल रहे हो, क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय है या कंपनी के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। आई बिलीव दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर चंद्र मोहन जी, शिरीष जी ऑल्सो क्लियर, ओके। और तो कोई क्वेश्चन अभी इसमें है नहीं, लेट मी सर्च। तो विजय जी और तो क्वेश्चन कोई नहीं है, बाकी तो सब क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। विजय जी म्यूट हो आप। हाँ, कमल जी की एक ही ग्रीवेंस है कि खाली मेरा फेस दिखता है और कोई अपना फेस दिखाता नहीं है, तो मैं अकेला अकेला फील करता हूँ। इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि पॉसिबल प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, एटलीस्ट अभी तो अपना फेस दिखाइए उनको, भाई वो किनको एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे अनिल जी का फेस नजर आया है, भूपेंद्र जी का तो गूगल सर्च यूआरएल नजर आता है हमेशा। भूपेंद्र दिखाएगा ही नहीं, वो स्पेशल है। हाँ वो मुझे पता है स्पेशलिटी क्या है, लास्ट टाइम जब शुरू हुआ था ना उन्होंने अपने नोट्स अकाउंट डिस्क्लोज किए थे। मणिलाल भाई भी फर्स्ट टाइम आए हैं, ही वाज द पर्सन हु मिस्ड द अर्लियर सेशंस। तो विजय जी हाँ, इजाजत है मुझे, आई शिरीष बिलीव जी भी शिरीष जी भी आ गए। यस आई कैन सी शिरीष जी, नमस्कार शिरीष जी।
ठीक है सर, आज मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ये इंटरेक्टिव हुआ अच्छे से। सर ये इसलिए इंटरेक्टिव हुआ क्योंकि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थे ना लास्ट 2 सेशंस में, वो जनरली हम लोग करते नहीं है, तो यूज टू हाँ, नहीं थे उसके। आज जो हुआ है वो करते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि रोज रूटीन लाइफ का मैटर है। अपने अपनी केस क्वेरी सामने आ गई सब। हाँ जी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट विल बी मीटिंग ऑन द 18th, नेक्स्ट मंडे। Please take note, it is not